Welcome to Maths class. Today I am going to teach you practice set 2.4. So let's solve. Here question number 1 says that multiply. Here question number 1 there are 3 sub questions. We will solve all the 3 sub questions one by one. Now here as you can see here sub question 1 root 3 bracket root 7 minus root 3 close the bracket. Now here always remember whenever you see this bracket now that means there is an operation of multiplication. Is that clear? That means root 3 will multiply by root 7 and then subtraction sign and then again root 3 will multiply by root 3. Is that clear my dear students? यानी कि root 3 7 से multiply होगा. Then we will use their minus sign and now again root 3 will multiply by root 3. Is that clear my dear students? So simple and easy to understand. Yes. Now root 3 into root 7. So what we will do here, we will take one common radical sign and inside that we will put that 3 into 7. Then we will do here subtraction sign and then again one common radical sign and inside that 3 into 3. Okay, so here inside this radical sign 3 into 7 minus inside this radical sign 3 into 3. So 3 7s are 21, root 21 minus 3 3s are root 9. So here root 21 minus root 9. As you all know that root 21 does not have a perfect root. So we will write that root 21 minus root 9's root is 3. Square root of 9 is 3 and there is no perfect square for root 21. So we will write there root 21 minus 3 3s are 9. So we will put there only 3. No radical sign because root of 9 is 3. Is that clear? So here final answer will be root 21 minus 3. Now we will solve sub question 2. Same like sub question 1. See here sub question 2 में root 2 जो है ना वो bracket के बाद है यानी कि after bracket there is a root 2 and in sub question 1 root 3 before bracket था. आई बात समझ में? तो यहाँ पर 5 multiply by root 2. Then we will write here subtraction sign and then again root 7 multiply by root 2. Is that clear? तो आप क्या करेंगे 5 root 5 into root 2 है तो हम एक कॉमन रेडिकल साइन लेंगे और उस कॉमन रेडिकल साइन के अंदर हम 5 into 2 माइनस साइन देन अगेन रेडिकल साइन एंड 7 into 2 करेंगे. Is that clear? So 5 2s are 10 and 7 2s are 14. Like that. Okay my dear students, so here root 5 into 2 minus root 7 into 2. So 5 2s are 10, root 10 minus 7 2s are root 14. Is that clear my dear students? So here root 10 minus root 14. As you all know that there is no perfect square for root 10 and there is no perfect square root for 14. So as it is root 10 minus root 14. Isn't it easy to solve? Yes my dear students. So in this way we have solved sub question 1 and sub question 2. Now let's solve sub question 3, last sub question of question number 1. Now here sub question 3 says that first bracket 3 root 2 minus root 3, second bracket 4 root 3 minus root 2. Now here what we have to do, first bracket will multiply by second bracket. Okay, that means 4 root 3 will multiply by 3 root 2 minus, here minus minus will become plus. Okay, so root 3 will multiply by root 2. Is that clear? So simple and easy to solve. That means here first term will multiply by first term and second term, that means root 3 will multiply by here root 2. Okay, like that. Minus minus becomes plus. This thing you have to remember. Is that clear? That means root 2 will multiply by root 2 and root 3 will multiply by root 3. So simple. That means 3 root 2 multiply by 4 root 3 minus root 2. Okay, then minus root 3 will multiply by 4 root 3 minus root 2. आई बात समझ में? यानी कि 3 root 2 जो है ना
वो सेकेंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। फिर -√3 जो है ना वो भी अगेन सेकेंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सीखी हो ना क्लास 8 में, वही हमें अप्लाई करना है यहाँ पर। सो 3√2, यहाँ पर √2 मल्टीप्लाई √3 होगा और यहाँ पर अगेन ये इससे मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली √3 4√3 से मल्टीप्लाई होगा, देन √3 √2 से मल्टीप्लाई होगा। Is that clear, my dear student? Isn't it easy to solve? Okay, so now let's solve here. 3√2 will multiply by 4√3. 3√2 will multiply by 4√3. Then give here subtraction sign. Then again 3√2 multiply by √2. First bracket done. Now second bracket minus sign. Give here minus sign. Then second bracket √3 multiply by 4√3. Then minus. Give here minus sign, then √3 multiply by √2. Okay, this minus will become plus. Now let's solve further. 3√2 multiply by 4√3. Now 3 4s are 12 and 2 3s are 6. So 12√6. Is that clear? Similarly, here 3 4s are 12. 3 multiply by 4 and inside this radian 2 into 3. Okay, then here 3 1s are 3 because √2 there is no number is given, only red color radian sign 2, 3 √2 is given. Okay, so here 3 multiply by 4, 3 multiply by 4 that means 12 and √2 multiply by √3 that means inside this radian 2 into 3. Now here minus 3 multiply by, here no number that means invisible 1, so 3 1s are 3 and 2 into 2. Inside the radian we will put there 2 into 2. As you all know that 2 2s are 4. So 2 into 2 we will write here. Then give your minus sign. Then make a bracket. Then here 4. There is no number, that means there is an invisible 1 here. Here for √3 there is an invisible 1. So 4 1s are 4 and √3 multiply by 3. Inside this radian 3 multiply by 3. Now give here minus sign. Okay, 3 3s are 9. So 3 into 3, give a minus sign. Now √3 into 2. So inside this radical sign 3 into 2 we will write. Is that clear? So simple and easy to solve. Yes. So now here 3 4s are 12, 2 3s are 6. So 12√6 minus 3 4s are 12√6 minus 3 1s are 3 √4 minus 4, 3 3s are 9 and minus 2 3 2s are 6. So here as you can see here 12√6 minus √6. So here there is no number given, that means there is an invisible 1, √6. Okay, so as you can see here 3√4 minus 4√9 minus √6. Okay, 3 2s are 6, so √6. So what we will do here? Okay, we have to solve this multiplication method and there is an operation of addition and subtraction. So how we will do this? So here 12√6 minus 3 2s are 6. As you all know that 3 2s are 6. So there is a perfect root for 4. There is a perfect root for 4 means 2. So 3 into 2, 3 2s are 6. So here 12√6 minus 3 2s are 6. Okay, 3 2s are 6. Perfect root for 4 is 2. Okay, then 4√9 का root क्या है? 3 है. So radical sign remove कर देंगे. This radical sign will remove and we will directly write there 3 because root of 9 is 3 and inside this radical sign 6 because there is no perfect root for 6. So 4 3s are 12. 12 minus √6. Is that clear, my dear students? Isn't it easy? Minus will become plus. Minus become plus. So here 12√6 minus 6 minus, break a bracket, 4 3s are 12 minus √6. Okay. Now here 12√6 minus 6. Now here minus become plus. Okay. As you all know that minus become plus. So how we will solve this? So let's check it out. So further here 12√6 minus 6 minus 12 minus become plus, so plus √6. Okay, so here 12√6 minus 6, then
minus plus minus, so 12 root 6. Okay, so 12 root 6, 12 root 6 get cancelled. Okay, here plus sign, we will put here plus sign because minus minus become plus and root 6 का root 6 ही रहेगा. Okay, now here see further part here. So 12 root 6 minus 12 minus minus become plus, so plus 6. Okay, I have written here. Now as you all know that here 12 root 6 and again we have here plus 12 root 6. So how we will do this? As you all know that here we have to check the common part. So 12 root 6 plus root 6. Okay, then minus 6 and minus 12. So 12 ones are 12 and 6 plus 6 is 12. So 12 root 12 minus 12 minus minus plus. So 18. Okay, minus 18. So here 12 root 12 minus 18. As you all know that there is no number, so 12 ones are 12. 12 plus 1 13. Okay, 12 plus 1 13 and 6 plus 6 12. Okay, so like that. So 12 plus 1 13 and root 6 will be common as it is. And here 6 minus minus plus, so 80. Is that clear, my dear students? Isn't it easy to solve? So in this way you have to solve sub question 3. So my dear students, we have completed question number 1, sub question 1, sub question 2 and sub question 3. Now your task is to solve all these sub question in your maths notebook. Now let's solve question number 2. Rationalize the denominator. So here what we have to do? Rationalize the denominator. This question we have already done in practice set 2.3. Okay, question number 9. Have you remember that? Same technique we will apply here when we are solving 2.4 question number 2. Here we will applying conjugate technique. That means denominator अगर negative है तो उसे हमें positive करना होगा. Conjugate of root 7 plus root 2. That will be root 7 minus root 2. यानी कि positive negative में convert हो जाएगा. कॉन्जुगेट करना होगा. कॉन्जुगेट मीन्स कन्वर्ट करना होगा हमें. रूट 7 प्लस रूट 2 था डिनोमिनेटर, तो हमने उसे क्या किया? नेगेटिव कर दिया. रूट 7 को माइनस किया रूट 2 के साथ. तो we have to apply this conjugate method when we are solving rationalize the denominator of practice set 2.4 question number 1. Okay, question number 2 here. Root 7 plus root 2 will become root 7 minus root 2. Is that clear? So this technique we are applying here. So here it would be like this. So after using this root 7 plus root 2, now after conjugate this we have to just do here operation changes, that is plus will become minus. So here root 7 minus root 2. So here what we will write here, so as you can see here I have written multiply root 7 minus root 2 to both numerator and denominator. Same technique of practice set 2.9 question number 9. Okay, multiply root 7 minus root 2 to both numerator and denominator. So 1 upon root 7 plus root 2. So after conjugate we get here root 7 minus root 2. So root 7 minus root 2 numerator, denominator root 7 minus root 2. See here my dear students, we are using this denominator, multiplying denominator from both numerator and denominator, but we have used here conjugate. means denominator अगर positive है तो उसको negative बनाना है और अगर negative है तो उसको positive करना है. Is that clear? So 1 upon root 7 multiplied by root 2 into root 7 minus root 2. Then denominator root 7 minus root 2. So here we will applying here a plus b, a minus b, that means a square minus b square technique. This algebraic expression, okay, expansion formula you have used in class 8. You have already studied in class 8 this thing. So here a plus b and a minus b. Okay, first bracket is a plus b and second one is a minus b. Root 7 plus root 2, that is a plus b, and root 7 minus root b, that is a minus b. Okay, so here 7 ones are 7, so root 7 minus root 2 upon
plus into minus minus, so root 7 square minus root 2 square, that means a square minus b square. We are applying here formula of expansion formula, a plus b, a minus b, that is equal to a square minus b square. So here 7 square minus 2 square, because plus into minus is minus. Okay, so numerator root 7 minus root 2, 7 sevens are 49 and perfect root is 7, 49 root is 7 and 2 2s are 4, perfect root of 4 is 2. ओके, सो जो रेडियंट साइन था वो रिमूव हो चुका है. सो हियर रूट 7 माइनस रूट 2, 7 minus 2 is 5. So this will be your final answer. So root 7 minus root 2 upon 5. Is that clear, my dear student? Isn't it easy to solve? Yes. So here we are getting after conjugate this root 7 plus root 2, okay, positive into negative, we get here root 7 minus root 2 upon 5. Is that clear? In this way we have completed sub question 1 of question number 2. Now let's solve second sub question, that is 3 upon 2 root 5 minus 3 root 2. Okay, again we have to apply here rationalizing the denominator method. Okay, that means here 2 root 5 minus 3 root 2 दिया हुआ है, तो हमें इसको conjugate करना होगा और हमें यहाँ पर लिखना होगा 2 root 5 plus 3 root 2. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि अगर ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, और अगर पॉजिटिव है तो उसे नेगेटिव में कन्वर्ट करो, एंड देन यू हैव टू अप्लाई a माइनस बी एंड a प्लस बी फॉर्मूला. ओके, a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. दैट फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई हियर. ओके, सो सबसे पहले हम इसे कॉन्जुगेट करेंगे. आपको पता है इधर 2 रूट 5 माइनस 3 रूट 2 है, तो हम इसको क्या करेंगे, कॉन्जुगेट करेंगे 2 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 को, दैट इज इक्वल टू 2 रूट 5 प्लस 3 रूट 2 हो जाएगा. आई बात समझ में? यानी कि जो नेगेटिव नंबर है ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर कॉन्जुगेट. ओके, सो हम यहाँ पर ऐसा स्टेटमेंट लिखेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ 2 रूट 5 माइनस 3 रूट 2 इज 2 रूट 5 प्लस 3 रूट 2. सिंपल है, सिर्फ माइनस का साइन रिमूव करके यहाँ पर प्लस का साइन लगाए, बस दैट्स इट. अब हमें ये 2 रूट 5 प्लस 3 रूट 2 है ना, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों साइड लेना है. तो हम यहाँ पर और एक सेंटेंस लिखेंगे, मल्टीप्लाई 2 रूट 5 प्लस 3 रूट 2 ऑन बोथ साइड ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. आई बात समझ में? यानी कि ये जो नेगेटिव था इसे हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट किए. कॉन्जुगेट मतलब जस्ट कन्वर्टिंग द वैल्यू, मतलब पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव में ऐसा कन्वर्ट करना है. तो अभी दिया हुआ नेगेटिव था तो नेगेटिव से हमने इसको पॉजिटिव किया. नाउ मल्टीप्लाई, अभी हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई 2 रूट 5 प्लस 3 रूट 2 टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब क्या करेंगे, 3 अपॉन 2 रूट 5 माइनस 3 रूट 2, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड. ओके, इसको हमको मल्टीप्लाई करना होगा ये अभी जो कॉन्जुगेट किए ना हमने कन्वर्शन उसके साथ. सो 2 रूट 5 प्लस 3 रूट 2 अपॉन 2 रूट 5 प्लस 3 रूट 2 के साथ, दोनों ही सेम रहा. अभी देखिए, अभी यहाँ पर तो कोई सब्ट्रैक्शन है ही नहीं, क्योंकि 2 रूट 5 माइनस 3 रूट 2 जो था वो a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है. ओके, सो a स्क्वायर b स्क्वायर, a माइनस बी है, ये वाला जो साइड है वो a माइनस बी है और ये वाला साइड a प्लस बी है. आप देख सकते हो तो पहला वाला माइनस में और दूसरा वाला प्लस में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a प्लस बी, a माइनस बी, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सेम फॉर्मूला वी हैव टू अप्लाई हियर माय डियर स्टूडेंट्स. सो व्हाट वी विल डू हियर, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 रूट 5 प्लस 3 रूट 2 के साथ. ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से. सो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रूट 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रूट 2. ठीक है, इसलिए मैंने बाहर ब्रैकेट के बाहर 3 रखी हूँ. सो 3 2 ज़ 6, फिर बाद में रूट 5, 3 3 ज़ 9, देन रूट 2. आई बात समझ में? क्योंकि 3 है ना, रूट थोड़ी ना है. सिमिलरली डिनोमिनेटर में 2 रूट 5 स्क्वायर, सो 2 2 ज़ 4, ये जो स्क्वायर है वो 2 के लिए भी है और रूट 5 के लिए भी है. सिमिलरली माइनस जो स्क्वायर रूट 3 के लिए भी और 2 के लिए भी है. सिंपल है.
ठीक है। तो यहाँ पर ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, तो आपको यही करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वाई? बिकॉज प्लस माइनस माइनस होता है, इसीलिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। डिनोमिनेटर इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? सो हाउ वी विल सॉल्व दिस? सो आपको पता है 3 2 ज़ 6, 6 रूट 5 माइनस 3 3 ज़ 9, 9 रूट 2. Now 2 2 ज़ 4 and 5 5 ज़ 25, so root 5. Okay, so simple. Okay, now here 3 3 ज़ 9 and 2 2 ज़ 4. Then again उसकी जो रेडिकल साइन है ना वो रिमूव हो जाएंगी। ये बात समझ में बहुत सिंपल है। ओके, हमें वही टेक्निक का यूज़ करना है जो हमने फर्स्ट वाले इसमें अप्लाई किए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इजी टू सॉल्व। नाउ हियर 3 ब्रैकेट 2 रूट 5 प्लस 3 root 2. Okay, now 4 2 2 is 4, 5 5 is 25, so root of 25 is 5. Now 3 3 is 9 and 2 2 is 4, root of 4 is 2. हमने डायरेक्टली लिख दिया इधर, 4 इंटू 5 माइनस 9 2 is 9 इंटू 2. ओके, डिनोमिनेटर हमने डायरेक्टली सॉल्व किए। 2 2 is 4 and 5 5 is 25, so root of 25 is 5 and 3 3 is 9 and 2 2 is 4 था, तो 4 का रूट क्या है? 2 है। ठीक है, सो 4 5 ज़ 20 एंड 9 2 ज़ 18, 20 माइनस 80, और न्यूमरेटर जैसा कि वैसे ही हमने लिखा है। न्यूमरेटर में अब तक कोई चेंजेस नहीं हुआ है, तो अब चलो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 ज़ 6, ठीक है। डिनोमिनेटर बोला है ना, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो बस रैशनलाइज हो रहा है, ये तो आपको दिख ही रहा है ना, रैशनलाइज हो गया है। ठीक है, आप देख सकते हो ये अभी ये रैशनलाइज हो चुका है, तो हम लोग यहाँ पर ही इसको स्टॉप कर सकते हैं, इसके आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो 20 माइनस 18 करेंगे तो 2 हो गया, बस इतना ही बताओ। न्यूमरेटर में चेंजेस करने की नो नीड। ओके, वाई? बिकॉज वी हैव टू शो ओनली द रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो देखिए ना, हमने डिनोमिनेटर पूरा सॉल्व किया है, एंड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 20 माइनस 18 वी फाउंड 2. ओके, सो हियर डिनोमिनेटर इज 2. Isn't it easy to solve? Yes. Now your task is to solve all this question in your maths notebook. Is that clear? Now come on, we are going to solve here question, sub question 3. Are you all ready? Yes. So 4 upon 7 plus 4 root 3. 4 upon 7 plus 4 root 3. So again rationalize the denominator. So denominator is 7 plus 4 root 3 है, तो यहाँ पर हम इसका क्या करेंगे? कॉन्जुगेट करेंगे, तो 7 प्लस 4 रूट 3 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 7 माइनस 4 रूट 3 में। आई बात समझ में? तो बस आपको इसको कॉन्जुगेट करना है, यानी कि कन्वर्ट करना है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव करिए, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव करिए। तो अभी जो डिनोमिनेटर आपके सामने दिख रहा है, आप खुद जानते हो अच्छे से, और आप खुद बोलोगे कि 7 प्लस 4 रूट 3 जो है वो कॉन्जुगेट होने के बाद 7 माइनस 4 रूट 3 हो जाएगा। आर यू ऑल एग्री? यस। 7 प्लस 4 रूट 3 क्या हो जाएगा? 7 माइनस 4 रूट 3. ओके, सो हाउ वी विल सॉल्व दिस? सो वी विल राइट हियर conjugate 7 plus 4 root 3 that is equal to 7 minus 4 root 3. Okay, why? Because we are rationalizing the denominator. हमें डिनोमिनेटर ही तो सॉल्व करके दिखाना है। न्यूमरेटर में इक्वेशन रहेंगी तो चलेगा, आपने देखे हो सब क्वेश्चन 2 में, लेकिन डिनोमिनेटर सॉल्व करके दिखाना है। तो कॉन्जुगेट ऑफ 7 प्लस 4 रूट 3 इज़ 7 माइनस 4 रूट 3, यानी कि प्लस की साइन को रिमूव करके माइनस की साइन लगाए। ओके, ये हमें वैल्यू यूज़ करना है। तो अभी इसे हम न्यूमरेटर में भी लेंगे और डिनोमिनेटर में भी लेंगे। सो यहाँ पर हम स्टेटमेंट ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई 7 माइनस 4 रूट 3 on both the side of numerator and denominator. ओके, मल्टीप्लाई करना है 7 माइनस 4 रूट 3 को on both the side of numerator and denominator. आई बात समझ में? तो यहाँ पर अभी स्टेटमेंट लिखते हैं, मल्टीप्लाई ओके 7 माइनस 4 रूट 3 to both numerator and denominator. Okay, so 4 upon 7 plus 4 root 3 into, why into? Because multiply है, multiply 7 minus 4 root 3 upon 7 minus 4 root 3, यानी कि देख सकते हैं ना आप यहाँ पर, ये a प्लस बी और a माइनस बी का मेथड है, दैट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिकॉज प्लस माइनस तो माइनस होता है, इसीलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब क्या करना है? 4 को मल्टीप्लाई करना है 7 माइनस 4 रूट 3 से,
और 7 प्लस 4√3 ए स्क्वायर ए प्लस बी, और 7 माइनस 4√3 बी a minus b, that is equal to a square minus b square. Okay my dear students, so simple and easy to solve. Now here what we will do, 4 multiply by 7 minus 4√3, so 4 7s are 28. Okay, 4 7s are 28, no need to calculate. ठीक है, न्यूमरेटर जैसा कि वैसे ही लिखो. 4 bracket 7 minus 4√3, close the bracket. Now 7 square, because 7 here, there 7 first term here, and there is also 7, and 4√3 common, so 4√3 the whole square. सिर्फ साइन का डिफरेंस है, तो प्लस माइनस माइनस. इज दैट क्लियर? So 4 bracket 7 minus 4√3 as it is. Now 7 7s are 49, 4 4s are 16, and 3 3s are 9. So here 7 7s are 49 minus 4 4s are 16 and 3 3s are 9. Root is 3. That is why मैंने यहाँ पर डायरेक्टली 3 लिखा है. ठीक है, 9 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज 9 का रूट ही 3 है, तो डायरेक्टली लिखिए. 4 4s are 16 मल्टीप्लाई बाय 3 3s are 9. तो रूट 9 नहीं लिखा, इंस्टेड ऑफ राइटिंग रूट 9 आई हैव रिटन देयर 3. So now numerator same to same, no changes. 4, because rationalizing the denominator, so no change in numerator. So 4 bracket 7 minus 4√3 upon 7 7s are 49 and 16 3s are 48. 49 minus 48 is 1. So 4 bracket 7 minus 4√3 upon 1, because 49 minus 48 is 1. Yes, we have proved that rationalize the denominator. After rationalizing the denominator, we get here denominator 1. So yes, our final answer will be 7 4s are 28 minus 4 4s are 16 √3 upon 1. Is that clear my dear students? So this is our final answer, 28 minus 16 √3 upon 1. Is that clear my dear student? Isn't it easy to solve? Now your task is to solve this question, sub question 3 in your maths notebook. Okay my dear students, now let's solve sub question 4 of question number 2. Here sub question 4 says that rationalize the denominator √5 minus √3 upon √5 plus √3. So here √5 minus √3 is given, okay, upon √5 plus √3 is the denominator. So what we will do here, as you all know that our question is rationalize the denominator, that means we have to focus on the denominator. So here conjugate √5 plus √3 will become, now can you help me? Yes, can you tell me what will be the denominator here after conjugate? So √3 plus √5 plus √3 will become √5 minus √3. So here we will write statement conjugate √5 plus √3 is √5 minus √3. Is that clear my dear students? So in this way you have to write statement, okay, statement of conjugate. Why? Because our question says that rationalize the denominator. We have to solve, we have to rationalize the given sums in denominator, okay. So here conjugate √5 plus √3 is √5 minus √3. Now here √5 minus √3, we will take this √5 minus √3 on both numerator and denominator side, okay. So here what we will write, multiply √5 minus √3 to both the side of numerator and denominator, okay. बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हमको इसे मल्टीप्लाई करना है √5 माइनस √3 को. सो हियर वी विल राइट √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय √5 माइनस √3 न्यूमरेटर, √5 माइनस √3 डिनोमिनेटर. Is that clear my dear student? Isn't it easy to solve? Yes. So this a plus b and a minus b, that is equal to a square minus b square. We have to apply that formula and we have to solve it. So here √5 bracket close, then √5 minus √3 first bracket, then minus √3, then again make a bracket, then √5 minus √3. That means first bracket will multiply by second bracket. Is that clear? That means first numerator term will multiply by second numerator term. Is that clear?
Isn't it easy to solve? Yes, minus minus will become plus. So we will check here the following operations. Okay, so are you all ready to solve it? So come on. Now your task here, yes, I'm selecting here pen. So yes, purple color. Now here, as you can see here, root 5 minus root 3. We have multiplied this root 5 minus root 3 on both the side, numerator and denominator. Okay, so here after multiplying we get here, so root 5 bracket root 5 minus root 3. Okay, root 5, so here x into x is equal to x square. Okay, why I am writing this? Because I want to explain you here how we have used this type of equation in our previous class 8 standard. We have used this. So here x into x, x square. So root 5 into root 5, okay, minus root 3 into root 3. That means root 5 square minus root 3 square. So 5 5 is a 25 minus 3 3 is a 9. 25 minus 9. So here root 5 minus root 3 the whole square, root 5 square minus root 3 square. Is that clear? So 5 5 is a 25. This square is for both the number root 5 and root 3, outer square. Is that clear? And here root 5 square minus root 3 square. So 5 5 is a 25 minus 3 3 is a 9. So now here, as you can see here, 25 minus 9 is how much? 16. And again 25, 5 5 is a 25 minus 3 3 is a 9. 25 minus 9 is how much? 60. Okay, so 16 is the numerator, 16 is the denominator. Okay, my dear students, do you find any difficulty to solve this kind of a sums? Yes. So what we will do here, 5 5 is a 25, root of 25 is 5 and 3 3 is a 9, root of 9 is 3. Okay, so root 5 minus root 3 as it is, 5 minus 3 is 2. Okay, is that clear? So 5 minus 3 is how much? 2. Okay, no need to calculate 5 5 is a 25 and 3 3 is a 9. Okay, no need to put that 16 also. Okay, very simple. So root 5 minus root 3 the whole square as it is upon 5 5 is a 25, 25 perfect root is 5 and 3 3 is a 9, 9 perfect root is 3. So here root 5 minus root 3 the whole square upon 5 minus 3 is 2. So here root 5 minus root 3 square is the numerator. So here, and denominator is 2. So here 5 5 is a 25. So we will apply this formula, a minus b the whole square upon 2. Okay, a minus b the whole square upon 2. This formula we will apply here. That means a square minus 2ab plus b square. Okay, why? Because here a square is root 5 minus b square is 3 square. Okay, so we will apply this and we have to solve this. So root 5 square, it will be like this, a is equal to root 5 and b is equal to root 3. As you can see here, a minus b the whole square. So root 5 is a and root 3 is b. Now here a is equal to root 5 and b is equal to root 3. So in the place of a square we will write root 5 square minus 2. In the place of a we will write here root 5 and in the place of b root 3, plus sign in the place of b square root 3 square upon 2 remain as it is. So 5 5 is a 25. Okay, so 25 root is 5 minus 2 1 is a 2, 5 3 is a 15. So 2 root 15 plus 3 3 is a 9, 9 perfect root is 3. Okay, 5 3 is a 15 and 2's remain as it is. Now 3 3 is a 9, 9 का perfect root क्या है? 3 है, तो हम लोग डायरेक्टली 3 ही लेंगे. 5 5 is a 25 था, तो हम लोग डायरेक्टली उसका perfect root क्या है? 5 है, वही लिए, और डिनोमिनेटर 2 का 2. Okay, so 5 minus 3 is how much? 5 plus 3, 5 plus 3 minus 2 root 15. So 5 plus 3 how much? 8. 8 minus 2, 8 minus 2 6 root 15. Okay, upon 2. So 2 1s are 2 4s are. Okay, we can directly divide also. So right here. Okay, so here 4 2 1s are 2, 2 4s are 8. So 4 into 2 minus how? 4 into 2, 4 2s are 8. Okay,
4 into 2, 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 रूट 15 अपॉन 2 का 2 ही रखे, ठीक है. डिनोमिनेटर विल रिमेन एज इट इज़. व्हाट वी विल डू हियर, 2 जो है ना वो कॉमन है क्योंकि 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 भी है, तो 2 को बाहर रखे और यहाँ पर 4 माइनस रूट 15, क्योंकि यहाँ पर रूट 15 के पास कोई नंबर नहीं है तो इनविजिबल 1 है. Now 2 get cancel, 4 minus root 15 will be the answer. Okay, so yes, after using this conjugate method, we found here 2 4 is 8 minus 2 root 15. Now this 2 is the common part. That is why we have written 2 outside the bracket. Okay, as you all know that 2 4 is 8. Minus here no number, that means invisible 1. So 2 get cancel, common 2 get cancel, 2 1 are 2, 2 1 are 2. Okay, so numerator will be 4 minus root 15. Okay my dear student, isn't it easy? 4 minus root 15 and नीचे कोई number नहीं है, that means there is an invisible 1. There is no number in denominator position, that means there is an invisible 1. Is that clear my dear students? So in this way we have completed sub question 4. Now your task is to solve practice set 2.4 all these question number 1 and question number 2, all these sub question in your maths 1 notebook. And most importantly, you have to upload your homework in Google Classroom. Do not forget to share your homework in Google Classroom. Enjoy learning.